जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बड़ी चुनौतियां अब राज्यसभा के सभापति के तौर पर भी सामने आने वाली हैं। फिलहाल अब 11 बजे का वक्त हो गया है शाम। एक बार हम जानना चाहें, 1 घंटा हो गया है वोटिंग शुरू हुए, फिलहाल क्या माहौल दिख रहा है वहाँ? यहाँ पर सुबह 10 बजने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने एक जिसे कहते हैं कि फ्रंट से लीड करना अपने कैंप को, तो वो वोट डालने के लिए पहुंचे थे यहाँ पर। उसके बाद लगातार यहाँ पर भीड़ लगी हुई है सांसदों की वोट डालने के लिए। उसमें बड़े नेता भी शामिल हैं, मसलन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वोट डालने के लिए आए। उसके बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे, मुलायम सिंह यादव यहाँ पर पहुंचे और लगातार यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। मीडिया का जमावड़ा है, फोटोग्राफर्स को छोटे छोटे समूह में ले जाकर मौका दिया जा रहा है कि वो जो सांसद वोट डाल रहे हैं या जो बड़े नेता वोट डाल रहे हैं उनका फोटोग्राफ ले सकें। तो एक उत्सव जैसा माहौल यहाँ पार्लियामेंट कॉरिडोर में अभी भी है। बिल्कुल, और हम देख रहे थे सुबह से किस तरह की कतारें भी लगनी शुरू हो गई थी। ज़्यादातर सांसद चाह रहे हैं कि वो सुबह सुबह वोट करें और खुद प्रधानमंत्री भी सबसे पहले वोट करने वालों में शामिल थे और विक्ट्री का साइन बनाकर तमाम सांसद भी दिखा रहे थे। इस तरह का जोश भी हमने देखा। और किस तरह की उम्मीद की जाए शाम फिलहाल, क्योंकि कल एक हम जिसे कहें डमी वोटिंग भी करके दिखाई गई ताकि राष्ट्रपति चुनाव में जो कुछ चूक हुई वो दोबारा ना हो। जी, मैंने बिल्कुल वही कहा ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौका कोई भी हो वो फ्रंट से लीड करने में शायद विश्वास रखते हैं। इसीलिए ये जानते हुए भी कि उनके उम्मीदवार की जीत एक तरह से सुनिश्चित है, उन्होंने एनडीए के सांसदों के साथ बैठक की, बाकायदा वोटिंग की प्रैक्टिस कराई कि जिससे किसी तरह की कोई चूक ना हो, किसी तरह की कोई गुंजाइश ना रहे। और उसके बाद सुबह जिस तरह से 10 बजने में करीब 10 मिनट से जब वो वोट डालने के लिए पहुंच गए और जाहिर है कि जब प्रधानमंत्री वोट डालने के लिए सुबह 10 बजे से पहले पहुंच रहे हैं तो उनको रिसीव करने के लिए न सिर्फ मंत्री बल्कि काफी सांसद भी होते हैं। और एक जो माहौल बनता है चुनाव के वक्त में अपने उम्मीदवार के पक्ष में, वो उन्होंने सुबह ही पैदा कर दिया और उन्होंने बाकायदा करीब 8 से 10 मिनट के करीब इंतजार किया कि वो कमरे का दरवाजा खुले, वोटिंग शुरू हो। तो वो सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में से प्रधानमंत्री थे। तो निश्चित तौर पर जब वो पहुंचे और उन्होंने जिस तरह का उत्साह दिखाया तो उससे पार्टी के सांसदों को भी एक तरह का इशारा मिलता है, संदेश मिलता है कि वो भी जितना जल्दी हो सके वोट डालने के लिए पहुंचे और अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करें। Shyam Sundar, do stay with us. We're going to come back to you in just a bit to get more reactions, more updates there from the Parliament House complex. A big day as far as Rajya Sabha TV is concerned, a big day as far as the country is concerned. Members of Parliament voting for the next Vice President of the country. The incumbent Mohammad Hamid Ansari's term ends on August 10th. Voting, of course, happening today through the course of the day from 10 a.m. To 5 p.m. and the results will be declared today itself. The Election Commission has said that the results could be declared by around 7 or 7:30 p.m. We at Rajya Sabha Television are going to continue to track the developments coming out of Parliament House through the course of the day today, get you minute-by-minute updates on what's happening there. Introduce our guests in our studio at this point in time. Mr. Ashok Tandon, senior journalist with us here in our studio to analyze what's happening in the Parliament House complex, as well as Sachidananda Murthy, the resident editor of The Week, joining us here in our studio. Thank you to both of you for joining us on the program. Big day for us here today, Mr. Tandon. Before we get into the numbers stacked in favor of Mr. Venkaiah Naidu and all of those other things, one alarming thing that we saw during the presidential election was 77 null and void votes. The BJP conducted an exercise yesterday to try and rectify that particular issue. In spite of that, there were 16 MPs who failed. I mean, it's bizarre, isn't it, when something like this happens? It is, certainly. It's very unfortunate that the elected representative of the people also sometimes fail to cast their vote correctly. But maybe sometimes, what happens is the procedure for putting the mark is different for different elections. For instance, in the general election, it's altogether different because it's an electronic voting, AVM is there. And but I'm glad that this time both the groups, they were very particular about the invalid voting, and they tried to ensure. And the mock drills which happened yesterday
and even in that some MPs perhaps didn't know. But I do hope that this kind of prompting and education will help the elected representatives, because it's very unfortunate, as you have said, that in the presidential election 71 votes got invalid, and well, let's hope that this time there is hardly any mistake. But nevertheless, that shows that at all levels in a democracy we need to educate people, whether they are elected representatives, members of the electoral college for the vice president election. But it's good that there is a system to educate, mock drill, and the NDA did mock drill twice. In fact, there was a demo given to them first, then there was a drill voting, and again some 16 odd members perhaps also failed. And let's hope that today, because only members of parliament, both houses of parliament are going to vote, and I do hope there won't be any invalid vote today. Let's hope so. Mr. Murthy, talking about the voting process itself, it's a fairly simple process, isn't it? It is a simple process, but I have been, like Mr. Tandon, we have been covering parliament for a long time, and I've also covered legislature earlier. I mean, voting is something which befalls our MPs. If you look at even the various votes of confidence and votes of no confidence in parliament, there have been a lot of mistakes, or the machine doesn't register the votes, or members would have wrongly pressed the wrong button, despite a lot of instructions by the Secretary General. They've been, so this happens because I think basically there's also a bit of tension at the moment of voting. I mean, unlike a general election here, you are there in the glare of cameras and all that. So there is and every time correction slips have to be given to them and all that in the house. So here, but then yes, this voting system as explained looks very simple and all that. But then I think MPs have to be more careful, maybe more do their own mock drills a little more and do that. But I'm sure over time, because also this doesn't happen regularly. They vote once in 5 years in these elections. Sure. That's also there. Yes, Mr. Tandon. No, I was watching the mock drill yesterday. See, even if that one mark which you have to put, if it touches the bottom or the top of the box, yes, even then there is a chance of getting invalid. I think that is going too far. See, you have put the mark within the box, but it should not touch either the bottom or the top of the box. That should be avoided, I mean, according to me, because sometimes, there are members who are old, age-wise, and their mark can just touch the bottom line or the upper line of the box. So that should not be declared invalid. But yesterday's mock drill, even that was advised to NDA members that it should not touch either side of the box, and it should be between the box, only straight line. And I think maybe some members who are old, they visibility-wise, eyesight, etc. These are basic problems. Yes, because somebody else can't do it for them. They have to do it themselves. Nobody can do it. And as Murthy was saying, sometimes, although they are very veteran, senior people, sometimes there is a bit of nervousness as well while putting the mark, that too with a special pen. So, यानी जो सख्ती तकनीकी पहलुओं को लेकर है वो थोड़ी कम होनी चाहिए, उसमें थोड़ी शिथिलता बढ़ती जा सकती है। खास तौर से कल जो बताया गया कि वो लाइन बिल्कुल बीच में रहे और वो एक नीचे ऊपर टच ना करे, तो इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है रिलैक्सेशन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ अब एक और ख़ास मेहमान जुड़ गए हैं, केजी सुरेश हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं IIMC के। केजी सुरेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राज्यसभा टीवी में। अगर अब बात करें उपराष्ट्रपति चुनाव की, हम जानते हैं 70 साल का लोकतंत्र हमारा हो चुका है। केजी सुरेश साहब, आपके नज़रिए में इस बार जो उपराष्ट्रपति चुनाव है वो कितना अलग आपको नज़र आ रहा है? वाकई इसमें कोई दो राय नहीं कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर इस संदर्भ में कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक बार बनने के बाद वो किसी दल विशेष से संबंध नहीं होते हैं, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही दल से जो है निकल कर आए हैं। ये पहली बार हो रहा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये विशेषकर महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दूसरी बार भैरों सिंह जी शेखावत जी के बाद जो है ये दूसरी बार हो रहा है कि बीजेपी से निकल कर आए एक व्यक्ति जो है वो
उपराष्ट्रपति के पद को जो है संभालने जा रहे हैं। तीसरा, पहली बार राज्यसभा के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी भले अभी एक ही संख्या से आगे हो, लेकिन पहली बार जो है बीजेपी जो है आज सबसे बड़ी दल के रूप में उभर कर आई है। ये भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसलिए ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज 29 में से 18 राज्यों में आज सत्ताधारी है, अपने आप में या किसी सहयोगी दल के साथ। तो ऐसे में अब राज्यसभा में भी उनका वर्चस्व है, बहुमत अभी नहीं है लेकिन वर्चस्व है। ये मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से ये चुनाव का एक अलग महत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार जो है बड़ा ही रोचक चुनाव है। मैं नहीं मानता कि कोई भी चुनाव जिस तरीके से मीडिया में शब्दों का प्रयोग होता है वन साइडेड वगैरह, वो तो होता ही है। कभी भी हार जीत एक उम्मीदवार की होती है, दूसरे की हार होती है। मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति चुनाव भी और उपराष्ट्रपति चुनाव भी दोनों ही हमारे लोकतांत्रिक जो एक व्यवस्था है उसको दोनों ने मजबूत किया है, दोनों ने अपने पक्ष रखे हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत ही इन कारणों से ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अशोक टंडन, आप क्या कहेंगे? क्या ये जानते हुए कि आंकड़े वेंकैया नायडू के पक्ष में हैं, विपक्ष का उम्मीदवार उतारना और इस चुनाव को लड़ना, क्या आप ये सिर्फ सांकेतिक मानते हैं या ये एक लोकतंत्र के लिए अच्छा प्रतीक है? बिल्कुल सांकेतिक नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया और विपक्ष मजबूत होना ये बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से विपक्ष इस मामले में एकजुटता दिखाई है, राष्ट्रपति चुनाव में एकजुटता नहीं दिखाई दी जितनी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में दिखाई दे रही है। और ये हमारे लोकतंत्र की खूबी है कि हमारे यहाँ पर कोई भी पद जिसको हम कहें कि बिना चुनाव लड़े या अनकंटेस्टेड नहीं जाता है। और विपक्ष ने भी बहुत ही सुलझा हुआ उम्मीदवार उतारा है। गोपाल कृष्ण गांधी एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व है, उनका बहुत अनुभव है, राष्ट्रपति भवन में भी है, उपराष्ट्रपति के भी कार्यालय में उन्होंने काम किया है। और मैं समझता हूँ कि एक स्वच्छ परंपरा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव पक्ष और विपक्ष ने लड़ा है और बहुत ही, मैं समझता हूँ, संजीदगी से लड़ा गया है। कहीं चुनाव प्रचार में इस प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बिखराव नहीं हुआ। बहुत ही अच्छे ढंग से ये चुनाव संपन्न हो रहा है। और लोकतंत्र का ये जो पर्व है, ये दुनिया देखती है कि भारत जैसे इतने बड़े देश में लोकतंत्र मजबूत होता है। यहाँ का राज्य अध्यक्ष भी लोगों द्वारा चुना जाता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो, और उपराष्ट्रपति भी चुने जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया देखती है कि इतने बड़े देश में लोकतंत्र मजबूत है। और उसके लिए सभी दल जिस तरह से इसमें लड़ते हैं, तो इसको ये नहीं कहा जाए कि क्योंकि एनडीए का बहुमत स्पष्ट था तो ये केवल सांकेतिक है। ये सांकेतिक नहीं है। और विपक्ष को भी आने वाले अगले चुनाव की दृष्टि से अपने आप की मजबूती बनानी है, एकजुटता बनानी है। और किसके नाम पर ऐसी एकजुटता हो सकती थी, गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पर हुई। वो दल भी जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए का साथ दिया, वो आज जेडीयू जो अब एनडीए में भी शामिल होने जा रहा है, वो भी आज गोपाल कृष्ण गांधी को वोट दे रही है। तो मैं समझता हूँ, जैसे हमने पहले भी यहाँ इस चर्चा में भाग लिया, कि अगर गोपाल कृष्ण गांधी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाता तो राष्ट्रपति पद के चुनाव में भी एकजुटता विपक्षी ज़्यादा अच्छी दिखती। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये एक लोकतंत्र के बहुत ही मजबूती का एक उदाहरण है कि हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया है और चुनाव होता है, पक्ष और विपक्ष दोनों में मुकाबला होता है और अपनी अपनी ताकत दिखाने का भी एक मौका मिलता है। You know, taking a cue from what Mr. Tandon has just said, Mr. Murthy, you know, many have asked what is the reason that the opposition has fielded a candidate when they know that they're going to lose this election in any which case, because it's a lost cause right from the beginning. But it is symbolic, and also in a democracy, you need some kind of an election, and that's what's happening right now, isn't it? It's always been a tradition. If you look at the presidential and vice presidential election, candidates winning uncontested has been very rare. Because the spirit of the, as Mr. Tandon rightly said, is that the opposition would like to have it. Because actually, if you look at the fundamental concept of democracy, is that every voter in a presidential and vice presidential election should independently exercise his vote. He should not be guided by his party loyalties or anything. I
I mean, that is the ultimate ideal of democracy, like it is in the general elections. Every voter takes his decision where to vote. In secret he decides. But we have a party system, whip system and other things are there. But so when two or more candidates, they offer their qualities, they tell what they would like to do, and then each voter is supposed to make up his mind and vote. So this is the ideal spirit of democracy, but also parties would like to use these elections as an opportunity, even though they know that their candidate will not win. I mean, earlier the Bharatiya Janata Party, when it was in opposition, fielded its candidates knowing very well that it was a lost cause. But then they made those statements. You know, when Mr. Shekhawat contested for the presidentship after being vice president, he said, first thing he said that I'll be a defeated candidate, but I have a certain ideology, I have a certain views, certain things I'll do. So they presented, like not this president, the previous president election also, Mr. Sangma again knew that he would not have a chance against Mr. Pranab Mukherjee. So I think that is the spirit, that this becomes a debating moment where rival ideologies, rival views, the competing views are put forth not only before the voters, the MPs and MLAs, but to the whole country. So the debate keeps going on. This is one occasion for that democratic debate. Indeed, indeed. You know, Mr. K.G. Suresh, as far as we will get to, you know, talking about both the candidates, Venkaiah Naidu and Gopal Krishna Gandhi in just a bit. But before that, a word on the incumbent Mohammad Hamid Ansari. He's done quite a few things during his two-term tenure as the vice president. For instance, you know, tweaking the question hour and 0 hour, also extending the timing of the session by 1 whole hour so that, you know, more work can be done and the time lost in disruptions can be accommodated in that 1 extra hour. So a word on his on his vice presidency. Well, I think that he has been, you know, he came from academic background and he has been able to bring in that, you know, academic, I would say that those standards in the discussions. He has tried his, I think that there were never major controversies. Political issues always keep cropping up, but otherwise he has maintained a, you know, the dignity and the decorum of the office, and whether one agreed with him or not on fora other than the Rajya Sabha, he has voiced his concerns over the issues which he felt strongly about. One may agree, or in a democracy everybody has a right to express their views, and one has a right to disagree with those views. But within the House, I think that he has maintained, always maintained, tried to maintain, you know, that neutrality to the extent possible. And of course, he has been, I mean, there is this position wherein, you know, the ruling party, you know, in the country did not have the kind of majority that, you know, in the upper house, which did not in a way facilitate the smooth passage of many important key legislations. But I think that the importance, the emphasis given to discussions, debates, and I don't think there were many occasions when he was, you know, accused of taking a partial view of things. Sure. And I think that that has, you know, I think that endowed a certain sense of credibility to the office of the vice president. And Mr. Venkaiah Naidu's statement that he, you know, would follow in the footsteps of eminent people like Radhakrishnan, Zakir Hussain, Shankar Dayal Sharma. I think that gives you a great source of strength, that, you know, he takes his legacy from those stalwarts who have occupied that key post, and right. He has said that I am no more now in those, you know, political, I have risen above that. Among the first things he did was not only just resigning from the cabinet, but also resigning from the party to which he has served since his childhood. I think that that's something very significant that adds to the, you know, I think the dignity of the office he is going to hold. Yes, Mr. Tandon, you wanted to add something to that? Yes, see, Mr. Hamid Ansari was a career diplomat, and when his name was proposed by the UPA, and there were questions being raised that how could a career diplomat occupy
the position of chairman of the Rajya Sabha? Will he be able to do justice to that? Look at his term, 2 terms as vice president and the presiding officer in the Rajya Sabha, remarkable. And to get attuned to the political class is not an easy job, to remember the name of all the Rajya Sabha members. And I think he has accomplished his job precisely in the manner befitting the constitutional post the vice president occupies as the presiding officer of the Rajya Sabha. And as you said, he has also set certain new traditions in the functioning of the Rajya Sabha, and conducting the Rajya Sabha in a very dignified manner, allowing time to all the opposition as well as, and especially in a house where the ruling party lacks a majority. And it's a very, I must say, tightrope walk, which he has done wonderfully. And plus, see, there are other roles for the vice president as well, not only presiding officer of the Rajya Sabha, yes, which Mr. Hamid Ansari has done wonderfully well. His visits abroad has been very successful, and he, you know, the vice president is also chancellor of certain universities, and he also preside over the appointment of certain constitutional posts in the country. So all these jobs put together, I think Hamid Ansari deserves a tribute for doing his job wonderfully well, and I do hope that all political parties, including the ruling dispensation, will agree that he has discharged his duty, I think, as per the constitution, right, and also to the satisfaction of all sections of the House. Sure. सचिदेव मूर्ति, आप बताइए, अब 13वें राष्ट्रपति की बारी है, और जिस तरह से हमने मोहम्मद हामिद अंसारी की लेगेसी की बात की है, जाहिर तौर पर जो चुनाव के नतीजे होंगे वो शाम तक घोषित होंगे, लेकिन वेंकैया नायडू की जीत तय है। वेंकैया नायडू ही क्यों? क्या उपराष्ट्रपति पद से ज़्यादा राज्यसभा के सभापति पर नजरें थी? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी में जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव आता है, एक चर्चा चलता है, क्या राष्ट्रपति पॉलिटिकल होना चाहिए ना नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, उपराष्ट्रपति भी कैसे हो। तो मैं तो ये बहस सुना हूँ, तो कभी कभी बोलते हैं नहीं, प्रेसिडेंट तो पॉलिटिकल होना चाहिए, कि तो वो तो पूरा संविधान के बारे में, सरकार रचने में, कॉन्फिडेंस सब के बारे में फैसला करना है, मगर वाइस प्रेसिडेंट नॉन पॉलिटिकल हो सकता है, कि तो वाइस प्रेसिडेंट का काम तो ज़्यादा सेरेमोनियल होता है, विदेश जाना है, बाकी लोगों से बात करना, तो राज्यसभा भी होता है, मगर तो एक दूसरा इसमें बोलते हैं नहीं, ये तो प्रेसिडेंट थोड़ा अबव पॉलिटिक्स होना चाहिए। तो जब के.आर. नारायण साहब का, अब्दुल कलाम साहब का नाम चर्चा हुए, वही था। तो आपको याद है NDA 1 में पहला नाम आया डॉक्टर P.C. अलेक्जेंडर। डॉक्टर P.C. अलेक्जेंडर सांसद नहीं थे, मंत्री नहीं थे, मगर उनको वो तो गवर्नमेंट में एक्सपीरियंस थे। तो दूसरा नाम डॉक्टर कलाम, वो भी सांसद नहीं थे। तो वहाँ मगर अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बताया, वाइस प्रेसिडेंट तो पूरा पॉलिटिकल होना चाहिए, क्योंकि तो उनका मेन रोल है चेयरमैन राज्यसभा। तो बैरान सिंह शेखावत जी का नाम होकर, अभी जैसे आप देखें तो कोविंद जी पॉलिटिशियन हैं, मगर उतनी हाई प्रोफाइल फ्रंट लाइन पॉलिटिशियन नहीं है। कभी भी मिनिस्टर नहीं थे, कभी भी वो एक लोकसभा इलेक्शन भी लड़ा है, मगर उतना फ्रंट लाइन पॉलिटिशियन नहीं थे। मगर वेंकैया जी तो फ्रंट लाइन पॉलिटिशियन, पार्टी प्रेसिडेंट, पार्टी जनरल सेक्रेटरी, सीनियर मिनिस्टर, स्पोक्समैन, फुल पॉलिटिकल। तो राज्यसभा हैंडल करने के लिए उनका चॉइस। मगर आपको ये भी याद है, प्रधानमंत्री जी सांसद का पार्लियामेंट्री पार्टी को बताया, आई कैन नॉट स्पेयर ए मिनिस्टर। जब मगर वाइस प्रेसिडेंट इसके लिए वेरी सीनियर मिनिस्टर को उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को ये कर दिया। तो इसलिए हर टाइम का पॉलिटिकल फिलॉसफी अलग होता है। तो के.जी. सुरेश, आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से वेंकैया नायडू लगातार कहते आए कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना चाहते हैं, और वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नहीं, उषापति बन के रहना चाहते हैं, उन्होंने अपनी वाइफ का नाम भी लिया था। लेकिन क्या माना जाए कि एक कांटों भरा ताज भी ये वेंकैया नायडू के लिए हो सकता है? और क्या इससे बेहतर क्राइसिस मैनेजर बीजेपी को इस वक्त नहीं दिख रहा था, इसलिए बड़े चैलेंजेस अब वेंकैया नायडू के सामने आने वाले? नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने जो भी चुनौती, उनको पार्टी ने जो भी दायित्व दिया है, उसको बखूबी निभाया है।
छात्र जीवन से ही उन्होंने जो है लगातार छात्र राजनीति में रहे हैं और जब उनको विधायक की जिम्मेदारी दी गई तो उसको बखूबी निभाया उन्होंने, सांसद की जिम्मेदारी दी तो वो निभाया, संगठन के अंदर भी उन्होंने कई पदभार संभाले और खासकर बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय पर उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष की भूमिका निभाई। तो आज भले वो जिसे कहते हैं एक फुल टाइम पॉलिटिशियन है, वो जिसे कहते हैं 24/7 पॉलिटिशियन है, लेकिन उसके बावजूद वो एक पार्टी के जिसको कहते हैं लॉयल सोल्जर वो हमेशा रहे हैं। कभी भी उनको लेकर, उनके किसी भी वक्तव्य को लेकर विवाद नहीं रहा है पार्टी के अंदर या बाहर। तो इसमें ये महत्वपूर्ण है कि उनको जब ये जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने 1 मिनट इसके बारे में जो है उस पर ये नहीं कोई किसी तरीके का विरोध या रेजिस्टेंस नहीं दिया, बल्कि उनको जैसे ही ये जिम्मेदारी दी गई कि आपको चुनाव लड़ना है उपराष्ट्रपति का, उन्होंने स्वीकार किया। ये उनके नेचर में हमेशा रहा है कि जो भी पार्टी ने दिया है। और लेकिन मैं समझता हूं कि उनके जिस तरीके के कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइंस, दलगत राजनीति से उठकर जिस तरीके के व्यक्तिगत संबंध उन्होंने सबके साथ बनाया है, मुझे लगता है कि वो कांटों भरा ताज नहीं होगा उनके लिए। ज़रूर इसमें कोई दो राय नहीं कि उपराष्ट्रपति का पद जो है कोई आसान नहीं है। उसमें खासकर उसमें जो राज्यसभा में जो अध्यक्षता का जो दायित्व है वो ज़्यादा उसमें जो है चुनौतीपूर्ण है। वो खासकर एक ऐसी स्थिति में जहां अभी भी जो सत्ताधारी दल जो है उनके पास अभी भी वो बहुमत नहीं है। ऐसे में उस जो क्रूशियल बैलेंस लाना, वो संतुलन लाना और वहाँ किसी के भी अपने ऊपर पक्षपात का आरोप लाए बगैर वहाँ जो राज्यसभा की जो जिम्मेदारी है एज द हाउस ऑफ एल्डर्स, उसके गरिमा को और उसकी जो दायित्वों को, हाउस ऑफ एल्डर्स का जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, उसको बखूबी निभाना मैं समझता हूँ कि, और वो पूरी तरह इसके लिए तैयार है। उनका जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग सब उनकी जो बातचीत है हम पहले से ही हम देखते रहे हैं। राजनीति में भी गंभीर समस्याओं पर भी जब वो बात करते हैं, वो उसको जिसे कहते हैं कि एक लाइटर टर्न में, उस सीरियसनेस में वो गंभीर रहते हुए भी उसमें भी वो मतभेद को मनभेद कभी नहीं करने देते हैं। मैं समझता हूं कि ये उनका सबसे बड़ी ताकत है और मैं समझता हूं कि वो राज्यसभा में उनका नेतृत्व जो है, उनका जो अध्यक्षता है, वो ऐसे समय में मैं समझता हूं कि एक बहुत जो क्रिटिकल बैलेंस की जो ज़रूरत है उसको वो बना रखेंगे। और आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद करते हैं कि राज्यसभा भी सुचारू रूप से चलेगी और वो उस मार्गदर्शन जो 40 साल से अधिक का जो राजनीति में उनका जो अनुभव है, सक्रिय राजनीति में, वो बखूबी जो है इस उद्देश्य को हासिल करने में ज़रूर मददगार साबित होगी। You know, Mr. Tandon, talking about some of the challenges really as far as the next vice president itself is concerned, I believe that, gaining the trust of the entire upper house of parliament, with MPs cutting across party lines and ensuring that there's a bipartisan view on several of the other issues, would that be the biggest challenge? Now, before I come to your point, see, let's understand the constitutional position of the vice president. See, our founding fathers, the constitution, when they were trying to, evolve this constitutional post, we inherited the parliamentary democracy from Britain, where there is a monarchy. But the head of the state, we looked at the American constitution, where there is a president. And the post of vice president was there only in the American system. And in the American system, the vice president is a running mate of the president, and his principal job is to, fill the gap in case of some contingency, and which has happened in the American system also. When President Kennedy died, Lyndon Johnson became the acting president, and there could be other instances also. So looking at that, our founding father, they evolved the office of the vice president looking only at that, there cannot be any vacancy at the level of the president, so there should be a vice president. And in that context, the office of the vice president was evolved. Then we went for a bipolar house,
in Indian Parliament, then the question was who will preside over that. So that role was given to the Vice President, which is not there in the American system. No, sir, it is there. No. The American Vice President presides over the Senate. And even last month, Vice President Pence's oath broke the logjam of 50-50 there. No, but this was basically copied from the American system, which is not there in the British system. So I have covered Parliament for a couple of decades, that the role as the presiding officer is not really the only job of the Vice President. Yes, true. But nowadays, because the way Parliament is functioning and a lot of disruptions taking place and lack of majority in the upper house, the role of the Vice President as presiding officer has assumed more significance than his constitutional position. True. And therefore, we are discussing more on that. So coming back to your point about the challenges, I think whosoever has occupied that high office of the presiding officer has conducted himself well in the past. And so did outgoing Vice President Hamid Ansari. And I have no reason to believe that Venkaiah Naidu, who has all the experience of 3 terms in the Rajya Sabha, Parliamentary Affairs Minister, and also Minister in NDA 1 and again NDA 2, it will not be difficult for him. See, the challenge is only when you don't take the opposition along. And if you take all sections of the House together then and evolve consensus on the proceeding, because House is supreme. The presiding officer is not supreme. Yes. It is the House which is supreme. True. And every decision has to be taken by the House. And the job of the presiding officer is to evolve a consensus. Sure. And therefore, when you take the opposition into confidence, and there is invariably a meeting prior to the sitting of the House at 11 o'clock, and that is where in the chamber of the presiding officer there is a meeting of the advisory committee, and there they try to evolve how to run the House today. And I see no reason why a very seasoned and experienced person of the stature of Venkaiah Naidu should face any problem. Sure, indeed. Mr. Murthy, taking cue from what Mr. Tandon just said, the first thing that Mr. Venkaiah Naidu did was denounced his party, denounced his background, and denounced everything else, and he said, going forward, I'm just going to do my job. And credit must be given where it is due, and that was the right thing to do, and probably his experience led him to do that. Yeah, I entirely agree with Mr. Tandon that the role of the chairman of Rajya Sabha has come into much more prominence than even the role of the Vice President compared to what the constitution makers had thought about. But I remember till the 90s, the chairman of the Rajya Sabha would come for the question hour in the morning, and question hour will run smoothly. Mr. Tandon would agree with that in the 50s, 60s, 70s, 80s. And then exactly at 12, he will leave the House when the 0 hour would start, allowing the deputy chairman to preside. And again, the chairman would return only when there is a major reply to a bill or by the Prime Minister, motion of thanks to the President for his address to Parliament and all that. So, but I think in the mid-90s, the Rajya Sabha became, when the government didn't have majority in the Rajya Sabha, it became much more. And then I found presiding officers like Mr. Krishnakant, Mr. Shekhawat, then later Mr. Ansari, spending more and more time, even presiding over the House during 0 hour. So one former Secretary General of Rajya Sabha told me, no, they should not do it. 0 hour. How can the Vice President of India get involved in chaos? See, that was the old perception that you are a presiding officer only for a certain purpose, not to be a very active, hands-on person like the Speaker of the Lok Sabha. So I think that is where things have changed. So now Rajya Sabha is a very active organ of the constitution. So the attention of the Vice President has to be devoted full time for that when it is in session. Sure. Also, another thing is over the last 20-25 years, after the introduction of the committee system and all that, Rajya Sabha committees, Rajya Sabha members are reviewing the performance of the government more and more. The administrative staff of the Rajya Sabha has expanded in geometric terms compared to, it was a very tiny secretariat because large scale of the work was done by the Lok Sabha Secretariat, including the Parliament estate.
But now look at the administrative load on the Vice President of India as far as Rajya Sabha is concerned. So, and Mr. Venkaiah Naidu, with his vast administrative experience, political experience, you'd be very happy to discharge all this. He will do it very well, and he will come with those one-liners to tell why he has taken those decisions. And also, you asked about how he will win over the opposition. I think he will do that because he has excellent rapport. Being part of the House, he has been friends with most of the members. And also during NDA 1, he was the one who was reaching out to the opposition parties on behalf of the party, both as a minister and as party president from 2002 to 2004. बिल्कुल, तो जो विट और ह्यूमर हम कह सकते हैं वेंकैया नायडू का, वो ज़रूर काम आएगा सदन के अंदर। और क्रॉस पार्टी रिलेशनशिप तो उनके सब जानते ही हैं, सभी पार्टियों के साथ अच्छे संबंध है। केजी सुरेश, अगर हम सदन से थोड़ा बाहर की बात करें, हम देखते हैं जब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री देशों के दौरे पर नहीं जा पाते तो उपराष्ट्रपति एक अहम जिम्मेदारी भी निभाते हैं। हम मान सकते हैं कि एक फॉरेन मिनिस्टर की तरह एक अच्छी जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति भी निभाएंगे जहां तक डिप्लोमेटिक संबंधों की बात आती है, क्योंकि एक बड़ा एक्सपीरियंस वेंकैया नायडू के पास है, एक बड़ी जिम्मेदारी इस तरह से भी। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। एक तो सबसे उनके एडवांटेज में मैं कहूँगा कि वो क्योंकि जो सत्ताधारी दल है उससे जुड़े रहे, तो विदेश नीति में जो सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, क्योंकि विदेश नीति में आप जानते हैं कि लगभग इस देश में एक आम सहमति रही है, जिसको कहते हैं कंसेंसस। भले अंदरूनी मामलों में ना रहा हो, लेकिन विदेश नीति के मामले में बाय एंड लार्ज अभी कुछ मतभेद हैं किसी विषय पर कि पाकिस्तान चीन से कैसे डील किया जाए, बट बाय एंड लार्ज एक ओवरऑल कंसेंसस इस देश के इतिहास में रहा है, जहां अटल जी जैसे व्यक्तित्व जो है उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में जो है भारत का प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र में किया है। ये इस देश का एक इतिहास रहा है। तो मैं मानता हूं कि विशेषकर क्योंकि वो इसी सत्ताधारी दल से वो निकल कर आए हैं, तो उस दल की जो प्राथमिकताएं हैं विदेश नीति के मामले में भी, उससे वो पूरी तरीके से वो जिसे कहते हैं कि वो जानते हैं उनको, और उसके वजह से वो बेहतर तरीके से, मैं समझता हूं कि जब भी वो विदेश जाएंगे, अक्सर ये बताया जाता है कि सेरेमोनियल होता है, मैं नहीं मानता हूं कि ये सेरेमोनियल है। अक्सर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जाते हैं तो उसमें जो है जो बॉन्डिंग्स बनती है, उसमें जो राजनीतिक और जिसे कहते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर जो डिस्कशंस होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और कई विषयों पर जो है वो सिर्फ एक टोकनिस्ट नहीं होता है। इसमें ज़रूर कोई दो राय नहीं कि कई जो सेरेमनीज होते हैं उनको अटेंड करना होता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही कई देशों में हाईएस्ट लेवल पर वो रिसेप्शन होता है, और जो बातचीत होती है वो कई देशों के बीच में आपस में जो है रिश्तों को सुधारने में बहुत मददगार साबित होती है। मैं मानता हूं कि उनके अपने राजनीतिक जीवन का अनुभव और कई मंत्रालयों को क्योंकि उन्होंने संभाला है, सूचना प्रसारण से लेकर आप देखेंगे कि ग्रामीण विकास, ऐसे कई मंत्रालय जो है उन्होंने संभाला है, जिसके चलते वो उनकी सरकार के कई प्राथमिकताओं के बारे में बहुत करीबी जानकारी रखते हैं। आपको याद होगा कि 2000 से 2002 तक जब अटल जी के सरकार में वो सदस्य थे और ग्रामीण विकास मंत्री थे, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो मेरे ख्याल से इस देश के इतिहास में कई बहुत ही एक कामयाब योजनाओं में से एक योजना रही है, उसमें उनका एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो क्योंकि उनका जो एक अनुभव है राजनीतिक क्षेत्र का, वो एमओयूज में दोनों कई देशों के बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और जो बातचीत है उसमें बहुत कारगर साबित होगी। हाँ, अशोक टंडन, आप क्या कहेंगे? इसको हम क्वाइट डिप्लोमेसी कह सकते हैं, इसमें वेंकैया नायडू का अनुभव किस तरह से काम आ सकता है? देखिए, बहुत सारे ऐसे विदेशी दौरे होते हैं जिनमें केवल आपको हेड ऑफ़ द स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, और किन्हीं कारणों से अगर राष्ट्रपति नहीं जा पाते तो उन जगह पर उपराष्ट्रपति गए हैं। पिछले कई वर्षों में देखा है उपराष्ट्रपति गए हैं, और फिर विदेश मंत्रालय से संबंधित अधिकारी भी उनके साथ जाते हैं। और औपचारिकताओं के अलावा, जैसे केजी सुरेश ने कहा कि कुछ ना कुछ राजनीतिक मामलों पर भी बातचीत होती है, और ये एक प्रथा रही है। उपराष्ट्रपति
विशेष तौर से उन देशों में जहाँ हमारे आपसी संबंध उस प्रकार के नहीं हैं, जैसे अधिकतर हमने देखा है कि अफ्रो एशियन कंट्रीज़ में, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में, जहाँ पर द्विपक्षीय संबंधों की उतनी नज़दीकियाँ नहीं हैं और जब वहाँ किसी प्रकार की औपचारिकता की आवश्यकता पड़ती है तो उपराष्ट्रपति उन जगहों पर गए हैं और भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और वहाँ ये माना जाता है जैसे किसी राज्याध्यक्ष का राज्याभिषेक हो रहा है या किसी देश में राष्ट्रपति के वो हो रही है, शपथ ग्रहण हो रहा है, या दुर्भाग्यवश कहीं इस प्रकार का भी आता है मौका कि जहाँ पर उनके अंतिम अंत्येष्टि में भी भारत का प्रतिनिधित्व करना है, तो इन कामों के लिए राष्ट्रपति विशेष तौर से जहाँ पर राज्याध्यक्ष हैं, जहाँ पर तो लोकतंत्र है और प्रधानमंत्री वाला मामला है, तो वहाँ पर विदेश मंत्री भी जाते रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि लोकतंत्र में और इतने दुनिया भर के देशों के साथ मैत्री संबंध बनाए रखने हैं और ख़ास तौर पर उन देशों के साथ जो बहुत छोटे देश हैं, विकासशील देश हैं और जो भारत की ओर देखते हैं एक नेतृत्व के तौर पर, तो वहाँ पर जब आवश्यकता पड़ती है तो उपराष्ट्रपति ने बहुत बाखूबी ये इस जिम्मेवारी को निभाया है। और कोई कारण नहीं है कि वेंकैया नायडू इतने अनुभव के साथ उस प्रकार के किसी भी जो भूमिका है उसको निभाने में उनकी कोई मुश्किल होगी। और हम देखेंगे कि इस लोकतंत्र का ये जो हमारा सिस्टम है ये बहुत अच्छी तरह से चलता आ रहा है पिछले 70 वर्ष में, और एक उदाहरण प्रस्तुत करता है भारत दुनिया के उन देशों में जो लोकतंत्र के लिए तरसते हैं और वो देखते हैं कि इतना बड़ा देश, और ये हमारी विशेषता दुनिया मानती है। पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पहले कुछ दशकों में क्योंकि एक ही दल का यहाँ पर राज्य रहने के कारण पश्चिम के कुछ लोकतंत्र देशों में ये धारणा बनती थी कि यहाँ तो क्या है, एक पार्टी का राज्य है और ये काय का लोकतंत्र है। लेकिन जब से हमारे देश में सरकारें बदलनी शुरू हुई हैं और लोगों ने लोकतंत्र के जरिए अपने मत से सरकारें बदली हैं, राज्यों में बदली हैं, केंद्र में बदली हैं, केंद्र में हुई तो राज्य में अलग की, उससे लोगों को विशेष तौर पर जो विकसित देश हैं, जो अपने आप को लोकतंत्र का बहुत बड़ा उदाहरण मानते थे, उनको लगने लगा है कि नहीं, भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं, यहाँ लोग सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये जो उदाहरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये एक अनूठी मिसाल है। ठीक है, fair enough. एक मिनट फ्रैंक, बस एक बार संसद भवन परिसर चलते हैं, जानते हैं वोटिंग किस तरह चल रही है। अरविंद कुमार सिंह संवाददाता वहाँ मौजूद हैं। अरविंद जी, आप बताइए अब किस तरह की हलचल है, अब कितने लोग जुटे हैं, क्या सरगर्मियाँ चल रही हैं वोटिंग को लेकर फिलहाल वहाँ? देखिए प्रीति, यहाँ जो है सारे जो महत्वपूर्ण नेता हैं वो लगभग आ चुके हैं और अभी भी आप हमारे दर्शकों ने देखा था गोपाल गांधी जो है वो खुद आ चुके हैं और विपक्ष के नेता जो है सोनिया गांधी, विपक्ष के जो प्रमुख नेता हैं वो लोग आ चुके हैं, सोनिया गांधी से लेकर के और जितने भी प्रमुख नेता हैं। आपने देखा होगा सुबह से ही जो है प्रधानमंत्री के बाद जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, ये सारे के सारे लोग जो है यहाँ आ चुके हैं और काफ़ी मुझे ठीक से आंकड़े अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या है जो लगभग वोट दे चुकी है, क्योंकि आज जानते हैं शनिवार का दिन है और सांसदों की अपनी भी बहुत सारी व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर के बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ वोटिंग हो रही प्रीति जी। बिल्कुल, और जिस तरह से आप बता रहे हैं, खुद गोपाल कृष्ण गांधी भी वहाँ मौजूद हैं। ज़रूर समझना चाहेंगे क्योंकि साफ तौर पर आंकड़े जो हैं वो एनडीए के पक्ष में हैं, और इसके बावजूद किस तरह से विपक्ष की जो बॉडी लैंग्वेज है वहाँ दिख रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर अपने आप को मजबूत दिखाना और एकजुट दिखाना इस समय बहुत बड़ी चुनौती विपक्ष के सामने है। देखिए प्रीति, जहाँ तक विपक्ष की बात है तो ये पहला मौका नहीं है कि जबकि निर्वाचन हो रहा है। इसके पहले ये बात अलग है कि 4 ऐसे मौके आए हैं जबकि उपराष्ट्रपति का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो है जो निर्वाचित है उसकी एक अलग अथॉरिटी होती है। और ये बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आम सहमति अगर बन जाए तो उससे अच्छी बात नहीं होती, लेकिन जो लोकतंत्र में है, विपक्ष है और सत्ता पक्ष दोनों जो है, दोनों अपने अलग अलग पक्ष हैं और ये इन्हीं से जाकर के एक मजबूत लोकतंत्र बनता है। तो दोनों पक्षों में उत्साह है और ये पूरा संख्या बल पर चलता है सारा गणित। निश्चित तौर पर जो है जब पिछले जो 2 चुनाव हुए जिसमें हामिद अंसारी साहब 2007 और 2012 में उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए, उस दौर का संख्या का गणित अलग था, आज गणित अलग है
और बीजेपी ने पहली बार इतिहास में जो है जो आंकड़ा है जो हासिल किया हुआ है कांग्रेस से ज़्यादा हो गई उसकी सदस्य संख्या। एनडीए धीरे धीरे करके जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका में आ गया है उच्च सदन में, जबकि उच्च सदन को लेकर के आपने देखा होगा कि काफ़ी तरह के सवाल खड़े हुए, उसकी भूमिका को लेकर सवाल खड़े हुए। तो मुझे लगता है कि ये निर्वाचन जो ये चुनाव जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और न सिर्फ उच्च सदन के लिए बल्कि ये पूरा लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाते हुए ये काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है। प्रीति जी। All right, Arvind Singh, thank you so much for joining us there with those details. Do stay with us. We'll come back to you later on in the program to get the latest from Parliament. Mr. Murthy, you know, voting is going on thick and fast, and, you know, probably in another half an hour or 1 hour or so, the voting should be concluded as well, because all the MPs will be keen on going back to their respective constituencies, today being Saturday as well. You know, but that aside, as far as the vice presidential election itself is concerned, 18 opposition parties coming together, fielding the name of Gopal Krishna Gandhi, trying to put up a united front. It's a bizarre situation for Nitish Kumar to be in, because he's the one who proposed Gopal Krishna Gandhi's name, and then things turned differently in Bihar after that. You know, now he's in an alliance. He broke the Mahagathbandhan. He's in alliance with the BJP now. So a bizarre situation there for Nitish Kumar to be in. Yeah, I know. But then Nitish Kumar all his life has been doing this very rare balancing things, you know. I mean, he was part of an anti-BJP configuration. He started his career with anti-Congress and anti-BJP. But then I think he has a certain this thing that politics is, you know, also a question of opportunities, how to make use of it, and then also take the moral high ground on issues. Though many people would say that he's actually doing a flip-flop and that he's doing it. So I think he has used it so that his personal image has improved, and he has not lost anything. He has won successive elections. He hasn't, the last 15 years have been quite good for him. So I think, but also here he said this very clearly. He said president election and vice president election, I will not go according to predetermined alliances or anything. And he said he did it again the last elections also he did that. So when he was part of the NDA, he decided to support Mr. Pranab Mukherjee. And another chief minister who did the same is the chief minister of Orissa, the Biju Janata Dal. They supported Mr. Kovind for the president's post, but they are supporting Mr. Gandhi here. So I think this is a trend where regional parties do not completely become aligned to national parties or national configurations, but each and every step they take separately, they'll think about it, they baffle their supporters, they sometimes please their opponent. So I think that's where even in parliament, what everybody calls the middle part behaves very differently on voting on bills and all that. So you can't, unless they are part of a UPA or NDA. Now, Mr. Nitish Kumar has made it very clear that right now he's part of NDA only in Bihar. He says being part of NDA in Delhi has to be negotiated, which means he has to bring in his parliament members. You know, already Mr. Sharad Yadav has made noises. Mr. Virendra Kumar from Kerala has said that he will not be part of the NDA. So I think he is treating it as two parts. And one is Bihar, one is the national level. Again, president, vice president election deciding on. So he wants to, within the NDA, maintain a certain room for maneuverability. He's being a typical politician, doing anything that it takes at the end of the day. That's right. You know, Mr. K.G. Suresh, as far as the opposition's unity is concerned, do you believe that the opposition's unity is going to be tested today? And also going forward, how much will the opposition's unity be tested, because they want to put up a united front and fight the NDA for the 2018 election? Well, to some extent, I think that this election can be termed as, you know, after what we saw in the presidential election, you see much more consolidation in the sense that BJD and JDU had voted for President Ramnath Kovind, whereas in this election you see them along with the other opposition parties. But I think that this should not be seen as anything to do with the bigger issue of opposition unity. I think this is a standalone case.
I think it would be in the upcoming Lok Sabha elections or in the assembly elections that you actually see the on the ground. Here there are certain compulsions that make you. One is the kind of, here you see, for instance, you see a rare combination of the Trinamool Congress and the left parties coming together to join the to support Mr. Gandhi. I don't think that you are going to see in West Bengal, or for that matter in the Lok Sabha elections, where they are going to fight each other, maybe independently. May not, Trinamool will not join the BJP, but certainly they are not going to be on the same side. So I don't think that the vice presidential election is a litmus test for opposition unity. Like we discussed earlier also, Mr. Nitish Kumar is certainly today at the electoral level, at the grassroots level, he is now part of the NDA. But here they say that he has given a word, and I think it has got something to do with the personal rapport also, that he shares with Mr. Gandhi, the vice president candidate, because that is what worked in his favor when he announced the support for Mr. Kovind also. At that time, he had not become part of NDA. But still, he had announced his support for Mr. Kovind, because as Bihar governor, Mr. Kovind and Nitish Kumar shared a wonderful relationship. And I think that this is what, has brought the left and Trinamool together, this time, because when Mr. Gandhi was the governor of West Bengal, he mediated. Particularly during those tumultuous times of Shingur and Nandigram, yes. He brought them together on the table. The Chief Minister, West Bengal Chief Minister, as also Miss Mamta Banerjee together on the table, and of course he had even condemned the Nandigram violence. But in spite of that, the CPM has endorsed. So I think that it's more about a personal rapport, and the dynamics in the vice presidential election are different from the dynamics that would guide the Lok Sabha elections or the legislative assembly election. So I don't see this as a symbol of opposition unity. Okay, fair enough. Okay, we are joined now by our correspondent Akhilesh Suman, who's standing by at the residence of Venkaiah Naidu. Let's quickly go across to him and get the latest from there. Akhilesh Suman, what is the mood like at Venkaiah Naidu's residence right now? Actually, Frank, that at 9:30 in the morning, Venkaiah Naidu has left his residence, and you can see this is the residence 30 APJ Abdul Kalam Road, and the guards are there, and you can see the poster there of who is congratulating Venkaiah Naidu beforehand of becoming the Vice President of India. So in a way that in the morning at 9 a.m. Prakash Javadekar, who is Union HRD Minister, he came here to invite Venkaiah Naidu to come to the Parliament and vote. And Venkaiah Naidu left at 9:30. Before leaving this place, he made a very matured statement. We were asking that whether it will be a partisan election, whether it is going to be election against Gopal Gandhi. So he said that we are not fighting any election against individual. We are fighting for Vice President of India. And with this matured statement, he left. But before leaving, he also made a statement that I am not belonging to any party at this moment. I am fighting for Vice President of India, who is also the chairman of Rajya Sabha, and I will be bipartisan. So Venkaiah Naidu had made very matured statement. He told that he will be representing the country at constitutional post. And that every MP, every member of parliament is there in Parliament at this point of time when voting is going on. So in a way that this is a calm and cool period for Mr. Venkaiah Naidu and his family who is residing here. And that all the goods are almost packed here. Before we have seen that his all goods have been packed, and once he joins and he takes oath of the post on 11th this month, he will be moving to the Vice President's house. So in a way that this is the period when Venkaiah Naidu can have some rest in this house, and after that he will be Vice President of India, because results are very predictable, Frank. Right. Okay. Akhilesh Suman, thank you for joining us there with those details. Stay with us. We'll come back to you in due course of time to get the latest from you and get the latest from what's happening there outside Venkaiah Naidu's residence at this point in time. But Mr. Tandon, elections today, results will be declared this evening. What's likely to happen in the days to come? Incumbent Mohammad Hamid Ansari's term ends on the 10th. Will we see
Venkaiah Naidu or whoever it is being elected as taking over the post of the Vice President on the 11th, on the next day itself? See, the timetable is already set in advance. So once the result is announced, as the procedure we saw in the case of the presidential election, the returning officer will issue a certificate, will go to Mr. Venkaiah Naidu and hand it over to him that you are declared elected as the Vice President of India. And then the ceremonial things like the farewell for the outgoing Vice President, Mr. Hamid Ansari, will start, and then there will be a formal swearing-in ceremony. The procedure is laid down, and but because there is some time in between, so I do hope that Mr. Venkaiah Naidu will be getting congratulatory messages from not only within the country but maybe even from abroad, because he holds the constitutional position as number 2 as the head of the state next to the president. So all this will continue, and the system will take over, and when he becomes the Vice President, the ceremony in Rajya Sabha will also be very interesting to watch when the new presiding officer takes over. So we will have to see. These are all, the festival democracy, change, a peaceful transition of power from one hand to the other, from the nominee of the UPA to the nominee of the NDA. All this is so fascinating for the younger generation in India. It's a reason for them to pose faith in democracy. So I think we should be proud of Indian democracy. इसीलिए देश में जब भी चुनाव होते हैं तो हम उसे लोकतंत्र के उत्सव और पर्व की तरह मनाते हैं, और इसकी मिसाल भी दुनिया में दी जाती है। अगर आगे हम बात करें इसके पॉलिटिकल इंडिकेशंस की, तो सच्चिदानंद मूर्ति, आप क्या कहेंगे? जब रामनाथ कोविंद का नाम राष्ट्रपति के लिए सामने आया, तभी ये कयास लगाए जाने लगे थे कि ज़रूर जो उपराष्ट्रपति के लिए नाम होगा एनडीए की तरफ से वो दक्षिण का होगा। क्या इसके कुछ राजनीतिक संकेत आप मान रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं वेंकैया नायडू किस तरह से दक्षिण में सक्रिय रहे हैं, जहां बीजेपी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। किस तरह के संकेत है इससे? नहीं, अभी आप देखें तो पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर तो बहुत सीनियर नेता पहले थे जगन्नाथ जोशी, उनके बाद तो वेंकैया नायडू बन गए। पर वहाँ दक्षिण में तो पहला उनका चीफ मिनिस्टर हुआ येडियुरप्पा कर्नाटक में, मगर वेंकैया नायडू तो उनको बीजेपी में कहते हैं इज़ द वॉइस ऑफ द साउथ। उनका आवाज़ क्यों, तो उन्हें इतना वो टूर करते हैं। वो कल जो पत्रकारों से मिले थे वो बोल रहे थे मैं तो दक्षिण में हर राज्य का हर तहसील को गया हूँ, हर तहसील में पॉलिटिकल वर्क किया हूँ, तो मुझे पूरा वर्क। तो किसी और ने बताया मगर आप नॉर्थ ईस्ट में भी थे। हाँ पूरा, मगर साउथ को ज़्यादा जाता क्यों, तो हमारा पार्टी मुझे वहाँ भेजते थे और कोई एमपी भी नहीं थे एक ज़माने में उतना। तो उनका ये तो एक सिम्बॉलिज्म भी है, एक एफिशिएंट मिनिस्टर, पार्टी लॉयलिस्ट, आरएसएस बीजेपी से बहुत जुड़े हैं और संसद का एक्सपीरियंस सारा है। मगर एक साउथ को क्यों, तो बीजेपी का अभी जो बाकी बचा है, सुरेश जी ये बता रहे थे उतनी स्टेट्स में उनका अधिकार में है, मगर बीजेपी का अध्यक्ष अमित शाह का लक्ष्य वो नहीं है। वो एक बार बोल रहे थे हम कितने स्टेट्स में हमारा सरकार वो नहीं, हम कहाँ नहीं है उस पर मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, तो उसमें तो दक्षिण का गोवा भी अब जुड़े तो 6 राज्यों में बीजेपी 5 में नहीं है, तो इसलिए वेंकैया नायडू का वो वाइस प्रेसिडेंट बना के एक सिंबॉलिज्म। दूसरे तरफ से साउथ के जो युवा नेता है बीजेपी का, उनका सरकार को आने के लिए एक मौका मिलेगा। तो वेंकैया तो परमानेंट फिक्सचर थे गवर्नमेंट में, तो अब एक और लीडर को मौका भी मिलेगा। मिस्टर टंडन, you want to add something? No, I was just trying to say that this balance between the north and the south has been there since the election of the first president. When Dr. Rajendra Prasad was the president, Dr. Radhakrishnan was the vice president, and this tradition has been maintained irrespective of the party in power, and that I think is a good balance. We need to maintain it, and this is exactly what has been done now. The same thing was done when Dr. APJ Abdul Kalam became the president. The NDA chose Mr. Bhairav Singh Shekhawat as the vice president, and earlier, you know, there has been only one occasion when the prime minister was from the south, Mr. P.V. Narasimha Rao, Dr. Shankar Dayal Sharma became the vice president. So I think it's a very healthy tradition which all political parties in power have maintained and tried to maintain a balance between north and south, east and west, and that shows
that India is one. So therefore, no segment of the society or any part of India should feel that they are not getting representation at the constitutional level. Today we have the Prime Minister from the West. We now will have a Vice President from UP and the Vice President from southern states. Venkaiah Naidu has that great achievement. He hailed from Andhra Pradesh, and he was thrice member of Rajya Sabha from Karnataka, and he was deputed by respective party presidents to go out, reach out to the people of Tamil Nadu and Kerala. So he truly represents the entire southern India. So I think today all 4-5 states of southern India will be feeling as if one of them is going to occupy this high position. So I think it's a very good tradition which is being followed to give representation not only to caste, creed, religion, sect, but also to the geographical, to maintain geographical unity of India. बिल्कुल, तो हर वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, ये हमारे देश के लोकतंत्र की खूबी भी है। ये जी सुरेश, इस पर आपकी क्या राय है? क्या इसके पॉलिटिकल इंडिकेशंस आप देखते हैं कि दक्षिण पर कहीं ना कहीं नजरें हैं बीजेपी की, या ये दोनों बिल्कुल अलग मसले हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव और 2019 पर नजरें? नहीं, मैं समझता हूं कि दोनों अपने अपने जगह महत्वपूर्ण हैं। जो अशोक जी ने कहा, इसमें भी ये एक परंपरा रही है कि हर जो देश के जो अलग अलग क्षेत्र हैं हमारे, देखिए एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है, मल्टीलिंगुअल, मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस, तो यहाँ वो सिंबल बहुत मायना भी रखता है। ये नहीं कि उसका कोई वैल्यू नहीं है। मुझे लगता है कि वो प्रतीकात्मकता अपनी जगह बहुत ज़रूरी है, और वो एक परंपरा सभी दलों ने उसको बरकरार रखा है, और एक तरीके से वो उसी का एक कंटिन्यूटी है। माफ़ कीजिएगा, आपको बीच में रोकना चाहूँगी। इस समय